Guys, you're watching my channel Abbott Academy. So this time, as you see, we are making a wireless mobile charger. Yes guys, so as you can see, it's quite amazing. Now let us quickly get into the components required. So the components required are an IC 7805. So it is a voltage converter IC, a sliding switch, a mobile connector. This you will get easily with an Android phone. A mobile connector, you have to cut its wires. A double tape, that is a double-sided tape, a 9-volt battery with a connector to a small piece of wire, a small box as per your convenience for making your wireless charger. Now let's get into. सर्किट डायग्राम है। ये हमारा IC 7805 है। इसका जो लेफ्ट मोस्ट पिन होता है इसमें ये पॉजिटिव होता है और जो बीच वाला होता है वो ग्राउंड होता है और थर्ड वाला आउटपुट का पॉजिटिव होता है। जो लेफ़्ट वाला पिन है उसमें हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह, और बीच में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे दो वायर्स निकलेंगी, एक पॉजिटिव एक आउटपुट के पॉजिटिव में लगेगी और यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग कर रखी है एक आउटपुट के पॉजिटिव पे और एक आउटपुट के नेगेटिव पे, ठीक बैटरी के नेगेटिव के साथ ही। तो ऐसा आपका कुछ कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से इसे इस बॉक्स में प्लेस कर देंगे।